हाय बच्चों, आप सभी को स्वागत है क्वेश्चन मैनी सीरीज में। हमने पार्ट 1 या युक्त लेक्चर 1 के क्वेश्चन प्रैक्टिस किए। अब हम लेक्चर 2 जिसमें प्रोकैरियोटिक सेल, राइबोसोम एंड इंक्लूजन बॉडी के क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट प्रोकैरियोटिक सेल? ऑप्शन ए फंजाई एंड प्रोटोजोआ, ऑप्शन बी प्लांट्स एंड एनिमल, ऑप्शन बी बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एंड माइकोप्लाज्मा एंड पेपियोलो, और ऑप्शन डी इज एन अमीबा। एंड द आंसर इज ऑप्शन सी। ठीक है, now how do prokaryote cells generally compare to eukaryotic cell in size and reproduction? Larger and slow reproduction, producing a smaller and faster multiplying, small size but faster multiplying, smaller but slow reproducing। हमने देखा था कि प्रोकैरियोटिक सेल जनरली स्मॉलर इन साइज होते हैं और उनका जो रिप्रोडक्शन होता है वो फास्टर होता है, तो हम कह सकते हैं स्मॉलर एंड फास्टर मल्टीप्लाइंग। विच शेप इज नॉट अमंग द फोर बेसिक बैक्टीरियल शेप? बैसिलस था, कोकोस वो भी हम पढ़े थे, विब्रियो वो भी था, फिलामेंटस नहीं, फिलामेंटस की जगह स्पाइरल था। ठीक, तो आंसर इज डी। व्हाट सराउंड द सेल मेम्ब्रेन इन द मोस्ट प्रोकैरियोट्स? न्यूक्लियर इन्वॉल्व, सेल वॉल, मेसोसोम, कैप्सूल। सेल मेम्ब्रेन के अराउंड क्या होता है? सेल वॉल होता है। विच प्रोकैरियोटिक लाइक अ सेल वॉल? कौन से प्रोकैरियोटिक सेल जिनमें सेल वॉल होता है नहीं? इकोलाई इसमें होता है, बैसिलस सबटिटल्स इसमें भी होता है, माइकोप्लाज्मा, यस, सी। How is the genetic material organized in prokaryotes? Within a membrane-bounded nucleus? नहीं. Option B, necked and not invaded by a nuclear membrane. Option C, packaged with histones. Option D, in multiple linear chromosomes. And the answer is B, naked. Besides genomic DNA, what other DNA do many bacterial possess? कौन सा और भी बैक्टीरियल डीएनए होते हैं बिसाइड जीनोमिक डीएनए के? माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, माइटोकॉन्ड्रिया तो होता ही नहीं, क्लोरोप्लास्ट डीएनए, क्लोरोप्लास्ट तो होता ही नहीं, प्लाज्मिड डीएनए और वायरल डीएनए। सो आंसर इज प्लाज्मिड डीएनए। What unique trait can plasmid confer to bacteria? Enhanced photosynthesis? नहीं. Increased size? नहीं. Antibiotic resistance या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फॉर्मेशन? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो होता ही नहीं, तो आंसर इज सी। Which cell component is present in the both prokaryotes and eukaryotes? गोल्गी पैचेस? नहीं. प्योलो यूकैरियोट में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया यूकैरियोट्स में होते हैं, राइबोसोम यस दोनों में, एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये भी यूकैरियोट्स में। देखिए तो आंसर इज सी। What is a semi-fluid matrix filling prokaryote cells? Nucleoplasm, cytoplasm, stroma, lysosome. The answer is cytoplasm. What unique structure is formed by unfolding of the prokaryote cells membrane? Option A, plasmid. Option B, nucleide. Option C, mesosome. Option D, vacuole. And the answer is option C. Which feature is absent in prokaryotic cell? Cytoplasm. Option B, genetic material. Option C, membrane bounded organelle. Option D, cell membrane होता है, साइटोप्लाज्म में होता है, जेनेटिक मटेरियल भी होता है डीएनए, वो अलग बात है, नेक्ड होगा। तो आंसर इज सी। Where is the where is the genetic material located in prokaryotes? Option A, floating in the cytoplasm within mesosome in nuclear region, not membrane bounded. Option D, attached to the ribosome. The answer is in nuclear region, not membrane bounded. What is the function of mesosome? Protein synthesis, DNA replication, specialized membrane function. Option D, photosynthesis. इसमें मोर देन वन ऑप्शन है, ए एंड सी दोनों है, तो हम सी पे जाएंगे क्योंकि और भी बहुत से ऑप्शन होते हैं। ठीक है, व्हाट डीएनए इज यूज्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग फॉर एनर्जी प्रोडक्शन, सेल वॉल सिंथेसिस, बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन विद फॉरेन डीएनए। ऑप्शन डी, राइबोसोम असेंबली। एंड द आंसर इज बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन विद द फॉरेन डीएनए। Which prokaryotic cell component store reserve material? Option A, plasmid. Option B, inclusion. Option C, mesosome. Option D, nucleide. में पता है inclusion जो कि मेरे रिजर्व मटेरियल को स्टोर करता है। Blue green alga are prokaryotes despite their ability to move with flagella. Option B, form multicellular colonies. Option C, perform photosynthesis implied by the inclusion example. Option D, have complex shape. The answer is perform photosynthesis. Blue green alga अलग होता है बैक्टीरिया से। What distinguishes the genomic DNA of prokaryotes? Linear structure,
with telomeres, single separated chromosome, multiple chromosome packed in nucleosome. नहीं पैकेज तो होता ही नहीं, लीनियर भी नहीं होता, सर्कुलर होता है, मल्टीपल नहीं होता. So single separated DNA. Which structure is unique to prokaryotes? Ribosome, cell membrane, mesosome, cytoplasm. Ribosome दोनों में होता है, यूकेरियोट प्रोकैरियोट में. सेल मेम्ब्रेन कॉमन है यूकेरियोट प्रोकैरियोट में. साइटोप्लाज्म भी दोनों में होता है. तो आंसर इज ऑप्शन सी. What primarily accounts for prokaryotic cell diversity? Presence of organelle, types of genetic material, fundamental cell organization या प्लाज्मिक कंटेंट. ऐसा क्या है जो प्रोकैरियोटिक के शेप में डाइवर्सिटी में कंट्रीब्यूट करता है? तो फंडामेंटल सेल ऑर्गेनाइजेशन या यूं क्या है कि सेल वॉल, ये तो हमें सेल शेप में डाइवर्स करता है. तो एक तरह क्या है, फंडामेंटल सेल ऑर्गेनाइजेशन ही सेल वॉल. तो आंसर इज सी. What compromises the what comprises the prokaryotic cell envelope? Single lipid layer. Option B, two-layer membrane system. Option C, three-layered structure like a calyx cell wall. Plasma membrane. या option D, peptidoglycan core only. Cell envelope किससे बनते हैं? तीन लेयर से. तो glycocalyx, cell wall and plasma membrane. How are bacteria classified using Gram staining? By cell envelope differences and stain retention. C, by flagellar arrangement. Option D, by DNA content. So the answer is B, by cell envelope differences and stain retention. What is the outermost layer of the cell envelope? Plasma membrane, peptidoglycan layer, glycocalyx capsule. तो सेल इनवेलप तीन लेयर्स बने होते हैं, जो कि सबसे आउटरमोस्ट आपको ग्लाइकोकेलिक्स होता है, उसके बाद सिल्वर एंड देन इट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन. तो आंसर क्या होगा? सबसे आउटर पूछ रहे हैं ना, आउटरमोस्ट. तो आंसर इज ग्लाइकोकेलिक्स. A thick tough glycocalyx is termed as slime layer, biofilm, capsule या मैट्रिक्स. तो ग्लाइकोकेलिक्स दो टाइप से होते हैं. अगर वो टफ होंगे तो हम कैप्सूल कहेंगे, अगर वो लूजली बॉन्डेड होंगे तो हम स्लाइम लेयर कहेंगे. तो टफ है तो ऑप्शन इज सी. व्हाट डिटरमाइन द बैक्टीरियल सेल शेप्स एंड प्रिवेंट बर्स्टिंग? इसकी वजह से इनके सेल शेप डिटरमाइन होते हैं और बर्स्ट उठते नहीं है. तो आंसर इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल, ग्लाइकोकेलिक्स से म्यूजियम. सॉरी, ऑप्शन था हमारा, ऑप्शन ए प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ऑप्शन बी सेल वॉल, ऑप्शन सी ग्लाइकोकेलिक्स, ऑप्शन डी म्यूजियम. तो किस वजह से होते हैं? ऑप्शन बी सेल वॉल की वजह से. Mesosomes are formed from invagination of the nucleus, extension of plasma membrane, cell wall material या ग्लाइकोकेलिक्स accumulation. तो मेसोसोम हमने पढ़ा था सेक्शन नंबर 2 में कि सेल मेम्ब्रेन इनर साइड फोल्डिंग करते हैं साइटोप्लाज्म में, इसकी वजह से मेसोसोम का फॉर्मेशन होता है. तो आंसर इज बी. Which function is not straight with mesosomes? Cell formation, DNA distribution, protein synthesis, respiration. हाँ, DNA distribution में हेल्प करता है मेसोसोम. थोड़ा डायग्राम से भी पढ़ा था. प्रोटीन से बिल्कुल कुछ स्पेशल प्रोटीन भी होते हैं, रिस्पिरेशन में भी हेल्प करते हैं. तो आंसर इज ऑप्शन ए. क्रोमैटोफोर साइनोबैक्टीरिया, फोटोसिंथेसिस एंजाइम, मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन containing pigment, DNA storage structure या स्लाइस राइबोसोम. आंसर इज मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन containing pigment. Bacterial motility involved pili, fimbriae, flagella और cilia. तो किस वजह से मोटिलिटी होती है? फ्लैगेला की वजह से. The three components of bacterial flagella are base shaft filament, option B filament hook basal body, option C root rod ring filament, option D motor filament column. The answer is filament hook and basal body. Non-motile surface structure adding attachment. किसकी वजह से अटैचमेंट होती है बैक्टीरिया में? फ्लैगेला ये तो मोटिलिटी में हेल्प करते हैं, फिमरे म्यूजियम ये तो रेस्पिरेशन वगैरह में हेल्प करते हैं, क्रोमैटोफोर तो पिगमेंट मेंटेन करते हैं. तो आंसर इज फिमरे. Pili are composed of polysaccharide, option B lipid, option C special protein या option D nucleic acid. जैसा ये स्पेशल प्रोटीन जिसे हम पाइलिन प्रोटीन भी कहते हैं. Fimbriae are best described as long whip-like structure, small blister-like fibered tubular motility organ या membrane enfolding. Answer is small blister-like fibers. What is the primary function of Fimbriae? DNA transport, surface attachment, cell division या nutrient absorption, and the answer is surface attachment. The plasma membrane key characteristic is
डिजीज स्ट्रक्चर, डीएनए कंटेनमेंट, सिलेक्टिव परमिएबिलिटी या पिगमेंट स्टोरेज। कैरेक्टरिस्टिक पूछ रहा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन कौन सा है, वो तो है सिलेक्टिव परमिएबिलिटी। Cyanobacteria contain specialized structure for photosynthesis called, किसके वजह से इनमें फोटोसिंथेसिस होती है? म्यूजोम नहीं, प्लाज्मिड नहीं, क्रोमेटोफोर नहीं, थैलोकाइट्स, इनमें थैलोकाइट्स होती है। विच स्ट्रक्चर इंक्रीजेस प्लाज्मा मेम्ब्रेन सरफेस एरिया? प्लाज्मा, ये तो मोटिलिटी में हेल्प करते हैं, पिलाई ये तो आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, म्यूजोम रेस्पिरेशन में, डीएनए ट्रांसफर में, डीएनए रेप्लिकेशन में, प्रोटीन सिंथेसिस में, और कैप्सूल, ये तो आपका आउटर मोस्ट लेयर है। और म्यूजोम एक तरह से इंटेंशन है, एक्सटेंशन है, सॉरी एक्सटेंशन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, तो इससे उससे सरफेस एरिया बढ़ जाता है। तो आंसर इज ऑप्शन सी। What distinguishes gram-positive bacteria, like the cell wall, retain crystal walled stain, have an outer lipid membrane, are always non-metallic? The answer is retain crystalline wall. The hook in Fazla structural connect basal body to DNA, filament to basal body, cell wall to glycocalyx cell, allied to membrane. The answer is filament to basal body. Vesicle, tubules, and lamella formation are characteristic of nuclear division. A ribosome. No. Mesosome? Yes. Mesosome. Where are ribosomes typically located in prokaryotic cell? Attached to the nucleus, nucleus होता ही नहीं है। न्यूक्लियस डबल बॉन्डिंग फॉर्मेशन स्ट्रक्चर में न्यूक्लियोटाइड में होते हैं लेकिन डीएनए होते हैं। साइड मेम्ब्रेन बॉन्ड डबल ये तो एब्सेंट ही होता है। विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं। प्रोटीन फील्ड इन द न्यूक्लियर डिवीजन, प्रोटीन फील्ड इन द न्यूक्लियर डिवीजन। What is the size of prokaryotic ribosome? That is 50 nanometer to 20 nanometer. Which two subunits combine to form 70 prokaryotic ribosome? 40 एंड 60 यूkaryotic राइबोसोम के सब यूनिट्स होते हैं और 30 एंड 50 प्रोkaryotic के सब यूनिट होते हैं जो मिला के 70 इसमें होते हैं। आंसर इज बी। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ राइबोसोम? डीएनए रेप्लिकेशन, लिपिड सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस या कार्बोहाइड्रेट स्टोरेज? द आंसर इज प्रोटीन सिंथेसिस। What structure formed when multiple ribosome attached to a single messenger RNA, mRNA? The answer is nucleosome, chromatophore. Sorry, option is nucleosome, chromatophore, polyribosome, the polysome, the mesosome. The answer is polyribosome, the polysome. What is the role of polyribosome? Synthesis mRNA, package, cellular material, translate mRNA into protein, or replicate DNA? The answer is translate mRNA into protein. How are reserved material stored in prokaryotes or cytoplasm within membrane-bound vesicles and in prison body in gas vacuoles attached to villi? रिजर्व मटेरियल में मेम्ब्रेन बाउंड्री वेसिकल में स्टोर होते हैं या इंक्लूजन बॉडी में? ये तो कंफ्यूजन है, तो इंक्लूजन बॉडी में। Key feature distinguishes inclusion bodies. Surrounded by nuclear membrane? Not bounded by any membrane. Yes. Which is not an example of inclusion bodies in mentioned? Photos, phosphate granules? Yes. Glycosyl granules? Yes. Cyanophilus granules ये भी होते हैं जबकि लिपिड ड्रॉपलेट कोई inclusion body नहीं होती। Now, gas vacuoles are specified found in all ground. ओके, थैंक्स। स्टे मोटिवेटेड, हम मिलते हैं अगले लेक्चर में, ठीक है।